and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I'm worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system, and we cannot allow this revolution to go by. Yes. Now, the next step, we have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So that would be the first part of a president's address. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. That's the first part. The second part would be about participation. We have done a caste census in Telangana. And what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो. मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी. हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिला रहे. So at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis in the wealth of this country.
If we look at the largest corporates in this country, they're all owned. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by tribals. If we look at the biggest media companies that support the Prime Minister, every day we see the Prime Minister's pleasant face, smiling face on these media. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by Adivasis. This is the fact. So central to any new development paradigm is the architecture of a new paradigm. And that architecture of the new paradigm can only be built once the caste census is placed on this table. Because once the caste census is placed on the table, we will know exactly how much of this country's wealth, how much of this country's power, how many of this country's institutions are owned by 90% of this country. There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population, and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है। जाति जनगणना, प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता क्या? आर्किटेक्चर, आप अंधे हो गए हैं क्या? पार्टिसिपेशन, रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग। चेहरा नहीं दिखता, ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में है, ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका, ये लीडर ऑपोजिशन को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। So the idea is, Speaker sir, the idea. Speaker sir, so the idea is, on one side, allow India and the Indian youngsters to participate in the coming mobility revolution. Allow them to participate in building robots, in building drones, in building electronic items, in building EVs. And on the other side, running parallel मैंने उनको ही मना the country, Speaker sir. ऐसा नहीं है, So, आप भी बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। Okay, Speaker sir, so parallel ideas. One idea, participate in the mobility revolution. Whether you're thinking of economy, weapons, production, healthcare, India should participate in this revolution. India should become the master of the electric motor, master of the battery, master of optics, and master of AI applied on top of that production system. Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. So we are going to run a parallel track. On one side, participation, revolutionizing the participation of Dalits, OBCs, Adivasis in the ruling of this country, in the institutions of this country, in distribution of wealth of this country. And on the other side, parallel track, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese in electric motors, batteries, solar panels, and wind. Yeah. So that is the first two parts of any presidential election address that any India Gathbandhan
leader would give you. The final, of course, we go back to the Constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों के आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनकी चर्चा न करें। बताता हूं सर, मोहन भागवत आप नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, आपसे अपेक्षा। सर, मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत का स्टेटमेंट Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker sir, this constitution is supported by this constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this House some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, the most interesting part, the most interesting part is, Sir, Maharashtra mein more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर।
मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, स्पीकर सर, स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, we have asked, स्पीकर सर, स्पीकर सर, we are asking this question, we are asking this, स्पीकर सर, population of Himachal Pradesh, please, population of Himachal Pradesh has voted, extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. Speaker, sir, that is broadly. So the third element of our President's address would be a determined defense of India's institutions, of our democratic system, and a re-look at our entire democratic framework, and the looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India.
So those would be the type of things that we would say in a presidential address. I'd like to finally say one thing. In the last, थोड़ा बढ़ा देता हूं, अब मैं थोड़ा और खींचूंगा, अब और खींचूंगा थोड़ा, अब और खींचूंगा. So in the last, there is a background, a philosophical background to what I am saying. Essentially, what I am saying to the youngsters of India and to this House is that instead of focusing on multiple things, instead of telling us a laundry list, give us a strategy, give us a vision, make it clear, right? Now, there is a philosophical basis to this. There is even a deep philosophical basis to this. I showed you the picture of Shivji, which you didn't allow me to show. I showed that picture for a reason. What does that picture tell us? If you look at that picture carefully, it tells us focus carefully. Do not get distracted. Do not look here and there. Do the job at hand. So there is a philosophical basis to the speech I have given. I have not told the House and the country that we will do this, and this. This is the philosophy of Shivji. Say what you have to say, but be clear that you're going to do that one thing and don't do 56, 70 different things. So there is a link between our philosophical tradition, our religious tradition, and what I'm saying. And that is what India needs to do. India needs to connect the past, the values of the past. You talk about Sardar Patel ji, but you destroy Sardar Patel ji's values every day. You talk about Ambedkar ji, you destroy his values every day. You talk about Nehru ji. No, you don't talk about Nehru ji. Right? You bow in front of Buddha. You destroy what he says. So the point is, you have to be truthful to what you are, right? And it is important that when you are giving a way forward to the nation, there is clarity of purpose. There is no hatred, there is no violence, there is no anger, because these things are destroying our country. So my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, very kind, and I thank the Prime Minister for coming and listening to it. माननीय श्री नरेश चंद पटेल, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, जाने वाले कोई नहीं रोक पाएगा। आप तो अपना भाषण दीजिए। महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मानवर, इस सदन में बोलते हुए सबसे पहले मैं महाकुंभ में हुई दुखद घटना को स्मरण करना चाहता हूं। उन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मानवर, जिन्होंने अपने जीवन की आस्था और भक्ति के साथ पवित्र स्नान करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासनिक कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते वो काल के गाल में समा गए। मानवर, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का ये एक जीता जागता उदाहरण था। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। परंतु जिस प्रकार की अव्यवस्था
इस बार रही वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि सरकार की संवेदनशीलहीनता और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करती है। मानवर, क्या यह सरकार को पता नहीं था कि इतने विशाल आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? क्या योजनाएं केवल कागज में बनती हैं जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? मानवर, इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुंभ में मरने वालों की सूची जारी नहीं की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पहले दिन कहा था कि महाकुंभ पर चर्चा हो। ये दुनिया का बड़ा मेला, इस मेले में इतनी बड़ी अव्यवस्था, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके का जनता के साथ मजाक हुआ, ये घोर निंदनीय है। मानवर, इस सरकार में असफलताओं की बहुत लंबी सूची है। मानवर, शिक्षा जो किसी राष्ट्र की बुनियाद होती है, आज भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुकी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में मानवर मजाक बनकर रह गई है। मानवर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन बड़े बड़े वादों के साथ होते कहा गया। मानवर, ये संस्था निष्पक्षता, पारदर्शिता की नई मिसाल कायम करेगी, लेकिन आज ये हालत है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही सोशल मीडिया में पेपर लीक हो जाते हैं। क्या यही सरकार की पारदर्शिता है? क्या यही डिजिटल इंडिया का सच है? नीट की परीक्षा जो लाखों छात्रों के मेडिकल के करियर को भविष्य तय करती है, उसके बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। मानवल, रेलवे भर्ती, एसएससी की परीक्षा, यूजीसी, नेट, कोई भी परीक्षा इस सरकार की अक्षमता से बच नहीं पाई है। एनटीए को स्थापित करने पर सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो मानवर खोखले निकले। मानवर, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की फसलों के मूल्य के एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। लगातार देश के किसान, करोड़ों किसान इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन आज हमारे देश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज पूरे देश के अंदर किसानों में जिस तरीके की निराशा है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। मानवर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो इस देश को और प्रदेश को चलाते हैं, जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव में कहते हैं हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हम किसानों को मालो माल कर देंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने आय दुगुना करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज ये देश किसानों का देश, जिस देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का दोहरा मापदंड अपनाए है, उससे हमारे लोकतंत्र को बहुत आघात पहुंचा है। मानवर, आज हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का लगातार प्रबंध किया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अभी बुआई के समय खाद की जितनी बड़ी किल्लत हुई, डीएपी मिली नहीं, यूरिया ब्लैक में मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार डबल असत्य भाषण पर विश्वास करती है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके का काम किसानों के साथ कर रही है, मानवर, हम किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ आज किसानों के साथ डबल दुख हो रहा है। मानवर, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो हमारे किसानों की फसलों को फसल बीमा के अंतर्गत उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। मानवर, इसका जिक्र इस हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति का भाषण है, इस पर इसका कोई भी जिक्र नहीं है।
मनवर किसान बीमा की दुर्घटना की शुरुआत समाजवादी पार्टी के समय में हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। पहले किसानों को कोई भी दुर्घटना का बीमा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों को बीमा दुर्घटना के नाम पर 1 लाख की राशि निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए कर दिया था। समय बीतता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान बीमा दुर्घटना पर आज वो 5 लाख की राशि लगातार वही बनी हुई है। हमारी मांग है कि किसान बीमा दुर्घटना की राशि को कम से कम 15 लाख रुपया करना चाहिए। मानवर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मुफ्त सिंचाई देंगे, किसानों को हम मुफ्त सिंचाई देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिंचाई नहीं है। बिजली महंगी हो गई, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त सिंचाई की बात करके किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मानवर समाजवादी पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकारी नलकूपों का पानी और नहरों का पानी फ्री किया था, और उसी समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों को निजी नलकूपों का भी बिजली का बिल माफ करेंगे। आज उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसानों को बिजली फ्री नहीं मिल रही है और उनके ऊपर बिजली का भार दुगुना किया जा रहा है, और निजी नलकूप धारक के ऊपर बिल लगाया जा रहा है। जो किसान ट्यूबवेल उनके वो फेल हो चुके हैं, उनके ऊपर भी बिजली के बिल लगाए जा रहे हैं। मनवर उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है। आज अभी फसल आई, धान की फसल, जिसका